Good evening, good evening, good evening, good evening. Hi, everyone. I hope you're all doing well. You're all amazing. Um that may or may not be the reality, but yes, we have to think that way. Yes, hi, hello, everybody. Good evening, good evening. Yes, my dear children. Now, as you can see on the screen, and I don't have to introduce it to you. It is something that you are undergoing day in and day out. Finally, we are standing today on the evening of 6th of January, and you will be beginning your final revision for your CA Inter Jan 2025 attempt. So it gives me immense happiness. I don't know what's your condition or position. अब सबसे पहली बात, while we begin this strategy, discussion of this strategy, which is going to be, superb and really amazing and important for you, I want something, and that is the energy from your side. If I feel that there's a lot of energy coming from your side, I'll be able to give you a lot of things which I have definitely prepared and planned for you. But if I find that if you are dull, then I'll also restrict myself to little things and just tell you those, and then okay, see you, tata, bye bye. So now it comes from you. Are you all clear with it? If you are clear with this, write clear in the chat, and that should show me that yes, you are completely energetic and enthusiastic and ready to take it. So that clear should come with a lot of R's, showing your excitement that yes, we are ready for RCA Inter Jan 2025. Yes, we'll do it. Oh my goodness, all set, all ready. That's very nice, very nice. So throughout, your energy is going to help me give you more and more and let you know how to tackle this entire journey of writing papers and coming up with your best. Okay? Yes. So definitely your energy has to be that. It is contagious. The moment you are so energetic, it gives me so much of happiness. Definitely. Chalo. So let us begin our discussion. सबसे पहली चीज is a very 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 important thing, and that is a power of your thoughts. This is what I want to tell you and discuss, and I'll take a few minutes of yours. I hope you give me permission for it. Do you allow me to do it? Do you allow me to take a few minutes of yours and discuss something very important? Sure. Okay. So when I am talking about this particular thing, which is power of your thoughts, see, I'll just tell you something. And this is not that I am creating an imaginary story or so, but I am discussing with you facts and reality. I meet so many people, and like the current profile of mine and the age where I stand, I meet people who are like in their 20s, late 20s, and their 30s, and even the young chartered accountants who have recently cleared and joined their jobs. So those young ones who have just got into their jobs and they have begun their journey, they are super enthusiastic and energetic when it comes to the position, when it comes to the working, and when it comes to the salary. So they are like very happy about it. But on the other hand, when I meet those people who are like in their 30s or in their 40s, and like when I talk with them, like, how's your work going on? So they are like, वही same है यार. सुबह जाओ, सुबह 8 बजे निकलना रहता है, 8:30 बजे, एंड देन वी रीच आवर ऑफिस बाय 9-9:30. सो मच ऑफ ट्रैफिक है. So I'm even talking about people there in Mumbai and Delhi and Dubai. So much of traffic there. So I just get exhausted, like 1.5 hour on the way, and then reaching the office, and then the same thing to be done. I have to do this and that and that, and so much of pressure from all the departments. And then evening, I'm supposed to leave the office by 6, but like every day it happens that I leave by 6:30 or 7 o'clock, and then again so much of traffic on the way, and then finally I reach my home by like around 8:30 and 9. I mean, what nonsense and rubbish this life has become. I just feel like leaving this job. Now, this is what a salaried person, an employee, says. And what he is getting every month in his hand is like 2, 3 lakh, 4 lakh per month, even 5 and 8 lakh per month when I talk about big cities and UAE and so. So, this is what they say.
On the other hand, then I meet a few businessmen and the entrepreneurs, and when I talk to them, like running behind the employees all the time, making them work to increase the sales and the revenue, and the margin is so less, and every time the suppliers have so much, and the technology is changing so much. I just got my website design, and again there are some changes I have to do, so much of it. So there, whoever like we are talking about, they are people who have achieved so much that like in a month they are getting 5 lakh and 4 lakh and 2 lakh per month in their account, and then they are placed at high positions, and then they have good reputed uh, position in the society. And after this entire, what they tell themselves at the end of the day is, you are doing rubbish in your life and there is no growth taking place, and you are at the same position since so long. Like the point is, you wanted to become something, you became something, you wanted to reach in a company, you have reached there, you wanted promotions, you have even got that, and still you are dissatisfied, and you are instilling in your mind that I am not living the life I wanted to. I am telling you, even after so much of money and after so much of accolades and appreciation from all over, people, when they imagine like this, they become so negative that they actually visit psychiatrists, and then there are certain mental issues that they are facing. It's all because of thoughts. On the other hand, I meet people who like even are not able to earn a lakh, like 40,000 or 30,000 or 50,000. But then when they sit with their family, they are like, they sit happily, they tell their kids something, what they have experienced, they talk nicely with their wife is very happy with husband and kids and everybody out there. It's all about thoughts. Why I'm sharing this with you, while you are preparing for your exam and you are reminding yourself, look boss, you have failed 3 times earlier, and now again what is going to happen, you will go and write inter paper, you will write every best possible thing, again the same is going to come to you. So now you have told yourself that this is what your future is, and you become a pessimist. And then you are somebody that I have given foundation so many times, couldn't clear foundation, and then through direct entry I have come in inter, and I don't know whether I'll be able to pass or not. I think the same crap is going to get repeated with me. And I am telling you that while you are going to write your paper and do your revision, when you have this in the back of your brain, you will not perform your best. Then ma'am, what is needed? I think in this, one thing that you have to understand is, whatever you have, whatever you have, please be thankful about it. If you have studied like out of 20 chapters, even 15, or even I would say 12 chapters, and you couldn't attend the classes, now you did the worst possible thing, but you have done something. Like, be okay with what you have done. 50% of the syllabus, fine with it. Done 70% of the syllabus, fine with it. Now do not cry over the spilt milk, that's gone, and you cannot undo the same. Now the time is gone. Now what you can only do is, you can act strategically, you can act strongly, and if you do that, you have the power to clear this exam, even when we are standing 4 days before your paper. I'm telling this to you. So it's not necessary that you have to get grip on all the chapters or on all the subjects. But what is necessary is, you have grip on your mind, that I will handle and tackle it. Now, what things you have to take care of, I'll tell them all to you, but you have to promise this. You are sitting like a fool, reminding yourself, this subject, this is not done, that is also not done, that is also not done. I have performed so poor in my mock test also. Every time I'm doing silly mistakes and I forget all the concepts, I don't know what's going to happen. You actually don't know what's going to happen. I am telling you, fail. This is what's going to happen. So can you just give me a confirmation that come what may, in next few days, you are going to control your mind? I don't know you could do it earlier or not, but you have to promise me and you have to promise yourself, I will not think anything negative even for a minute. Even if I'm not able to recollect what I had studied earlier, that's fine. That's fine. Even if I have not done full syllabus, that's fine. But I will not think negative that I'm going to fail or I cannot do it. Are you promising me? I want it from everybody. I said yes, energy matters. It does matter.
So are you all promising? Yes, everyone. All right. That's pakka promise. That's very nice, very nice, very nice. You can do it. Now, the second thing comes when I'm telling you all this. What is your requirement? I'll just remind you a story that I told you way back. I was there. I mean, there's a small story that I didn't tell you. Rather, I didn't tell any of my student ever about me. But I'll share it with you, and I think that would be a good thing for you. While I was in my CS professional, I could clear all the papers in one go, and that was all great and amazing. But let me share with you a story when I was in CS executive. I had filled the form of CS executive and I wanted to give it. And again, the same scene, I did not get time for preparation and so, but I was like clear that I have to write the paper. I had filled the form of both the groups. And what happened? I wrote my first group, first four papers. They were fine, okay, good enough. Then I told them, then I don't want to give next group. One was for sufficient. I don't think I'll be able to clear the second one. Then my mom said, no, 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 you have to go and write the paper. I said, chalo, okay, okay, fine. I wrote my fifth paper. I wrote my sixth paper. I don't know what happened. Though I had cleared my inter earlier and I had cleared my foundation earlier and they all were with good scores, but that time I was prepared. This time I was not prepared. So there was a subject called capital market. I got so scared that your Mayserah ma'am, I mean, it's not that every time you are in the best form. It's not like that. When you are a human, it happens. I did not write my paper 7. I literally did not write my paper 7 only because I was frightened that I will fail. This stupidity even I have done. And then from there, I learned it. No, I will not do it next time. And the two papers that I gave, जब वो result आया तो दोनों में पास थी. तो मैं last अगर दे देती और 40 भी आ जाता तो निकल जाता. But I gave up. I gave up and I was not able to muster courage. And there were certain reasons why this happened, but yes, whatever. And then in the coming exams, I learned a lesson. No, I'll take care of this. So this is what I want you to understand. When you are writing an exam, say after law paper, you realize that the paper was not up to the mark. This doesn't mean that you are going to carry that negativity while you're preparing for tax, or you may plan, no, I'm not writing the paper this time, I'll go in the next attempt. Or, for example, you're writing group 2 and then you gave cost, and immediately after cost, you realize, no, 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 what has happened? I did not do my best, though it was my best paper, जो उसकी मैंने preparation करी थी, so I'm not writing further. Never, never, never. So this is what you have to take care of. I did it once. I'm sharing it with you because even the toppers face this and even the average students face this, so everybody faces it. So you will not do anything wrong like this, and please don't put it publicly. I mean, it was just between us, so I'm just sharing it with you. Now, coming to, I just told you that this is the worst thing that you guys can do with yourself. Now, how to handle it? What are we supposed to do the moment you realize कि यार टेंशन हो रहा है, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा? मुझे तुम्हें जो बोल रही हूँ उसको तुम दिमाग में बिठा लो और तुम ऐसे वीडियो करके रिकॉर्ड कर सको तो तुम वो रिकॉर्ड कर लो. जब हमें ये लग रहा है कि यार कुछ करते करते एकदम से बन नहीं रहा या हम परेशान हो रहे हैं समथिंग लाइक दिस, तो मतलब व्हाट शुड वी डू एट दैट टाइम कि नहीं हो पाएगा? सबसे पहली चीज, आई थिंक, ओके ओके, आई वेट, यू कैन डू द अरेंजमेंट. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम. How to handle whenever you get that negative thought while you are preparing for your paper or even when you are writing your paper. So, सबसे पहली चीज आती है number 1. You have to remind yourself, I am writing CA inter exam and it is regarded as undoubted करके, बिल्कुल doubt नहीं, that it is one of the toughest exams in India. So it's a very high level. Now, when I am writing this paper, there are thousands of other children who are also writing this paper. And they are close to my age. So they are also facing the same that I am confronting. So tough paper, it is. Others are also facing the same situation, yes. But
Luckily, I have attended the classes. And yes, I did homework then. And even if I did not do homework all the time, I was pretty serious in class. Also, I did my self study. So I revised the syllabus maybe twice or thrice. So this much is done. So God has created a memory which has got certain retention power. Might not be the best one, but it has got certain retention power. And if I did it conceptually, I will be able to handle at least that much of paper that I will pass. Maybe I forget one question, or maybe I forget two questions, or maybe two, three questions come new. But out of the entire paper, if 20-25% I am unable to, or 30% even I am not able to, rest of the paper I can manage. This is what you have to remind yourself. And after this, quickly close your eyes and just do a short prayer, even if it is during the examination. Close your eyes and just pray to God that, dear God, see, you have seen me studying, whatever language you have, the way you want to convey your message, please help me out. And do not stop or get stuck in that question. Please leave the question then and there itself. If you feel that you are not able to handle it, leave some space and move to the next question. And while you're revising, if you're not able to get something, leave that chapter for the time being, move to something which is easier or which you can handle, and then get back. Are you clear with this, everybody? Yes or no? Yes. So one chapter, one question cannot make you fail. Even few questions and few chapters cannot make you fail. It is an ocean, and out of that, a few drops. If there's an issue with that, that's fine. The rest of it you still know. So that is what you have to remind yourself, and everybody has studied. I know that. If those who have not studied is a very different case. So I'm talking to those who have studied. तो दिस इज कम्प्लीटली फाइन. सो दिस इज वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. चलिए, अब उसके बाद ये आने के बाद मैंने तुम सबके साथ ये चीज शेयर करी थी. ये मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया. यू कैन इमेजिन अ कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड हु इज सन ऑफ अ न्यूज़पेपर वेंडर. Can we understand what would be their financial position? And when the financial position is not good, then the emotional position is really bad. Generally, this is the case because uh, the basic food and the basic shelter and the basic needs are even not fulfilled. In such a situation, if somebody is able to become a chartered accountant, my dear boys and girls, you are present here, I know that your condition is far better, each of you, than this particular family. And you might be, maybe because of certain reason, in a similar state. So you know the exam that you are writing, and if you pass in this examination, this is the best way through which you can help your family come out of this particular situation. And you have the power to do it. Remind yourself, tell yourself, yes, I have the power to do it. I can take the responsibility of my father and my mother. I can get the best things for them. And yes, I have the potential to clear this examination. Just by getting frightened because of one or two questions or a few chapters, will I fail in the examination? No. Such questions cannot make me fail. It's completely fine. I will do it. If I feel tired, I will still do it. If I don't feel like studying, I will still do it. If I feel like giving up, no, I will not give up, because I need to do it for the ones who have been doing for me. Remind yourself, I need to do it for the ones who have been doing for me, and they will never ask for it. But we have to understand the responsibility that we have on us. So please take care of this entire, all of you. And right now, before we jump into advanced accounts, I want this affirmation from all of you. What you have to do is, you guys cannot turn on your videos, I know, and I don't expect the same. You have your phones. What you have to just do, take a selfie of yourself with the screen and write a quote then and there itself, I am passing Jan'25 exam, and just keep it in your photos gallery. The day result is out, I want you to realize the potential that you have. You are passing. You are passing this time. I know this. But you have to tell yourself, it's not that I who is going to write the paper, you have to write the paper. Take a selfie of yourself with the screen in behind that I will do it this time. Jan 2025. CA Inter, I am passing. Yes.
If you are done with it, just write in the chat. If you can't feel shameful about it, the selfie is going to remain with you. जिस भी हुलियों में हो, it's fine. You are beautiful. You are smart, you're handsome, you're beautiful. That's completely fine, my dear children. Don't feel like, या हुलिया कैसा हो गया, ऐसे शक्ल के हो गए. It's okay. मैंने कल एक वो डाला था, तुमने शायद देखा, मैंने मतलब टीम ने डाला था, जिसके अंदर हालत सी है स्टूडेंट की while preparing and then afterward dashing dude smart. तो वो हो ही जाते हैं. तो उसके लिए कोई लोड नहीं लेने की बात है. जो भी कंडीशन अभी, दैट्स फाइन. सब लोग करने के बाद मेरे को चैट में कंफर्मेशन देंगे, डन डन डन, एंड द एनर्जी शुड फ्लो इन द चैट. यस, कम ऑन. तो रिजल्ट वाले दिन जब हम अपनी मार्कशीट डाल रहे होंगे, तब हमारे पास ये फोटो मौजूद होगा दैट ऑन 6th of January मैंने अपने आप को वादा किया था, आई एम डूइंग इट, एंड लुक एट दिस, दैट्स डन. गुड. चलिए, अब हम आ जाएं थोड़े से सीरियस काम पे, विच इज शेड्यूल फ्रॉम 7th to 10th. आपको क्या फॉलो करना है? डू यू वांट मी टू शेयर दिस विथ यू? I have prepared it for you, but do you want me to share it with you? Yes, who all want it? Yes, of course. इसीलिए तो हम आए थे. You want it. So the schedule from 7th to 10th. मुझे एक बात बताओ, तुम on an average अभी कितने घंटे एक दिन में पढ़ पाते हो? On an average एक दिन में कितने घंटे? बाप रे बाप, 15 घंटे. कहाँ पहुंच चुके हैं आप लोग? बहुत बहुत ही शानदार, क्या बात है. दैट्स ग्रेट. ऐसा है. ओके ओके, ऑल राइट. मैंने जो तुम्हारे लिए शेड्यूल बनाया है, वो मैंने बनाया है ऑन एन एवरेज 13 आवर्स एवरी डे का. 13 घंटा. मुझे तुम लोग पहले तो प्रॉमिस करो कि तुम बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज नहीं करोगे और उस शेड्यूल को वैसे ही फॉलो करोगे, क्योंकि वो शेड्यूल, बस मैंने सारा उसमें सारा सारा दिमाग लगा लिया है. सारी कंडीशन सोच ली, पेपर किस पैटर्न का, कैसा क्या, कोई भी एक्सट्रीम केस का आए तो भी तुमसे हैंडल हो जाए. प्रॉमिस. सबका प्रॉमिस नहीं आया है. ओके. तो अपने पास है ये, ध्यान से देख लेना है. आप स्क्रीनशॉट लेने में टाइम वेस्ट ना करो, मैं ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगी, तो नो वरीज अबाउट इट. और अगर आपको लगे स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन डू इट दैट वे. सी व्हाट गोज इज, here we have 7th, 8th, 9th and 10th. Okay, now what I have first done is the big topics, and you will listen carefully. You will not be like, I've heard this earlier. That's fine. You have to remain patient. So we have to first cover the big topics. So what you do is, when you get up in the morning or whenever you begin your studies for the day, you will be first doing the big topics. Okay. So financial statement on the first day and cash flow statement, these two you have to complete. उसमें क्या क्या करना है मैं अभी उस पे आती हूँ. देन ऑन 8th वी हैव one big topic which is branch, and then you have small topic which is internal reconstruction, chapters ले रही हूँ मैं. Then you have AS21 which you will be giving like 3 hours. Then AS23 and 27 you will be giving 1 hour. Then 10th of Jan amalgamation you will be giving 3 hours, and then buyback you will give nearly 1.5 hour. So on an average, if you see on everyday basis, 4 to 4.5 hours I have kept for your big chapters. So you have to complete it in that manner. First. Number 2 आ रहे हैं तुम्हारे, नंबर 2 आ रहा है तुम्हारे assets based AS. तो तुमको AS2 और AS10 करना है. अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, मैं उनको ग्रीन से मार्क कर रही हूँ. AS2 और AS10, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाकी से पेपर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये बड़े वैल्यूएबल हैं. AS2 AS10 वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक घंटा दे के करना है आपको इनको. AS13 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो AS13 AS16 1.5 घंटा और 1 घंटा दे के नेक्स्ट डेट पे करना है. AS19 and AS26 आर अगेन very important. You will not find much of variety in it, but yes, it has lot of relevance. Then you have got AS28. Generally all the asset based AS are important, and on an average they can have a weightage of, ये asset based AS की मैं बात कर रही हूँ, 10 मार्क्स से लेके लाइक 12-15 मार्क्स तक पकड़ सकते हो तुम. 10 से 12 मार्क्स तक का ये एरिया आ जाता है. और मैं इस एरिया की बात करती हूँ ऊपर की, तो आप ये मान लो बेयर मिनिमम
35 से लेके 50 मार्क्स तक का ये ऊपर का एरिया आ जाता है। तो अगर तुम समझ पाओ तो यही पोर्शन एक आपका तकरीबन 50 से 60 मार्क्स के आसपास का पेपर का बना सकते हैं। दैट इज द पोजीशन। ओके, गोइंग अहेड, AS4, 5 and 29, I have allotted 2 hours for this. These three are important, but out of these three, if I say the most important is AS29, you have seen we have done practice series and there were ample number of questions in AS29 that we did apart from module extra. Then AS18, you have least chances of coming of a big question coming from AS18 के 3-4 marks में आए. But yes, it is important when we talk about this area consolidation, and then again it can be used in some other topics, कहीं कहीं पे use हो जाता है, तो इसीलिए 1 घंटा इसको दे लेना है. AS9 holds importance, AS7 holds importance, AS15 employee benefit is not a very tough one, average chances of coming. AS17 again average chances of coming, and it's a very easy one segment. AS22, do it properly, chances of having a 3 to 4 marks question. AS24, 25, these are again the very small ones, so you can quickly go through them. You will not get a big question most probably out of it, and इनमें मैंने तुम्हें important points भी mark कराए हुए हैं कि ये main देख लियो, तो I will not say that they are very important. Then AS11 and 12, again they do not hold so much of importance, but yes, AS11 many a time, सुन लेना मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है लास्ट क्वेश्चन, उसमें ये कई बार वो जो कन्वर्जन वाला आ जाता है कि आपको कौन से रेट पे कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन. AS20 is very 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 important, very important. So I have made you mark green से वो चीजें which hold significantly more importance than the others. Is that fine? Is that fine? Have you just gone through it? Take screenshot of this. Now what I want you to understand, where has your energy gone, everybody? Come on. Now this totals to 10 hours, right? Now you will be spending 3 hours with the MCQs file or compilation that I have shared with you. I don't know whether you have done it so far or not, but you will be doing that MCQ ka compilation, which includes MCQs as well as case studies, by giving 3 hours ka time. As many you can do, as many possible. Then on the 8th, the total schedule is of 11 and a half hours. You will be giving like around half an hour of time. Do like 10-20 chote chote wale questions on the 8th. Then on 9th, you will be giving 2.5 hours ka time. Give 2.5 घंटे का time, and then again do that MCQ compilation का बचा हुआ balance part. I am pretty sure by spending this much of time, you will be at least able to cover all the case studies and major MCQs from there. Do not miss on this. I'm repeatedly saying, do not miss on this. This is really very very important, and you have the access to the same. तो ऐसे बिखरा हुआ नहीं है. I've shared the compilation with you. Coming to the 10th of January, 9.5 hours का total schedule बैठ रहा है. I want you people to please sit and write one mock test paper. Find time in any time in the entire day, somewhere here maybe, कि get up in the morning, complete this part, and then sit and write a paper here. ये जो topic नहीं हुए, ये you can do towards the day end, but write a mock test paper before writing the actual paper, because वहाँ कई बार हाथ नहीं चल रहा होता and we fumble and panic. But if you have written a paper just a day before, you know how to begin and handle it. Are you getting what I'm saying? So what you can take up in this is, you can take up any paper. Like we have conducted mock test papers, and like many have written the paper, and there were some great personalities who haven't. So you have that paper in the group itself, you can take up that paper and write that paper, so no worries about it. So write one paper. Is this much clear again? Yes or no? Fine. Now comes, ma'am, what questions should I do while we are revising, and how should I do them? So I'll clear your what to do and how to do. सबसे पहली बात, what to do में you have to do the list of important questions that I've shared with you. List of important questions that I've shared with you. Do that particular list. Now apart from that, what I want you to do is your practice series का जो मैंने तुम्हें finals भेजी हुई,
आई वांट यू टू डू देम। उनमें मार्क करके रखा था कि इजी कौन से हैं और टफ कौन से हैं। इफ यू जस्ट डू देम ओरली ऑल्सो, just read them and go through them once, especially for accounting standards, especially for accounting standards, they will be wonderful. It would be amazing even if you can do them orally. जो मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी है, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको लिख के करो, बाकी थ्योरी वाले ओरल कर लो। बट अगर आप एएस की प्रैक्टिस सीरीज वाली कंपाइलेशंस जो मैंने भेजे थे वो कर लोगे, इट विल बी फैंटास्टिक फॉर यू, super helpful. Okay, so if you don't have of any one or two topic, you please send me a message after the session and I'll share it with you immediately. That's one. Next, what else was to be covered? I think I'm missing on something. What else was to be covered apart from this? Yes. So should I cover it orally or should I cover it written? So kind of I have answered it. In every topic, listen patiently, please. In every topic, when you have practical questions, wherever you have practical questions which require some good calculation, write and do at least 1-2 questions. And where you find that they have got some very basic calculations, you can do them oral. Like I'll tell you example, you have questions like AS12 में questions, or you have questions in AS11. Now these are all very small questions. They don't have much of calculation. Go oral with them. But you have AS like AS13, and then you have AS20, and then you have AS21. In such case, you must write 2-3 questions of each topic and do it. Do not miss on that. हाँ, एक मिनट, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर लास्ट में करती हूँ, तो प्लीज राइट एंड डू देम. ओके, नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस ऑफ लाइक इंटरनल कंस्ट्रक्शन, सो दे कैन बी लाइक यू कैन डू मे बी एक आधी क्वेश्चन, बाकी सब टिक 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 करके कर लो. यू हैव क्वेश्चन ऑन बाय बैक, यू कैन डू कैलकुलेशन ऑन द कैलकुलेटर एंड जस्ट डू टिक टिक और आगे बढ़ जाओ. बट अमालगमेशन आई वुड से राइट एंड डू इट. AS21, write and do it. Branch, make sure you write and do. Financial statement is very easy, but children are gone when it comes to speed. Must write and do. Cash flow statement, at least एक दो क्वेश्चन write and do. तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई, ये बात भी समझ आ गई. अब मैं इसके आगे जाऊं और एक बार मैं पेपर की बात कर लूँ. 11th को क्या करना है मुझे याद दिलाना, बताना है मुझे तुम्हें, लेकिन मैं मेन पेपर की बात कर लूँ. हाउ to attend your paper. How to attend your paper. I'm just discussing everything in this particular session to make you very clear. How to attend your paper. सबसे पहले, मैं पहले भी वैसे ये चीज़ें तुम्हें बता चुकी हूँ. When you get your 15 minutes का टाइम, when you get your 15 minutes का टाइम, डिस्क्रिप्टिव में से फटाफट से एक रीडिंग लगाओ और आइडेंटिफाई कर लो क्वेश्चंस यू नो या टॉपिक्स विच आर इजी फॉर यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन सम पेपर है, सम पेपर, ऐसी शक्ल का चाहिए था मुझे. ये पेपर तुम्हारे सामने पेपर आया और ऐसे ही पेपर आने वाला है. तो ये पार्ट 2 है, ये तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्लियर होगा क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. ये जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है. इसको तुम अभी देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखना तो फिर भी पड़ेगा ही. तुम क्वेश्चन 2 से देखना स्टार्ट करो. ये फटाफट क्वेश्चन को गो थ्रू, कि मैं रीड करना नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ सिर्फ उसको चेक करो और ये देखो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है. ये क्वेश्चन है, कह रहा है पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ. ये तो ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन दिख गया. तुम्हें लगता है तुम्हें फाइनल अकाउंट्स मेजरली आता है, ओके, इस क्वेश्चन पे यहाँ डॉट लगा दो छोटू सा पेंसिल से, कि ठीक है. अगले क्वेश्चन पे आओ, टक 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 करके देखो, अरे यार ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के ऊपर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ. तुमने ये क्वेश्चन देखा, तुम्हें लगा ये हाँ ठीक है, मेरे को बाय बैक का तो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्लियर है, यहाँ डॉट लगा दो. फिर तुम आगे बढ़ो. तुमको 15 मिनट में क्या करना है तुम्हें आई होप समझ में आ गया. तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, बस पहला काम, कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बनते हैं. तो डॉट 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 भर लगा लो. तुम उसको जितनी जल्दी कर सको वो बेहतर है. अब जो तुमने मार्किंग कर ली है, उस मार्किंग में आप जाओ और ये चेक करो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है, प्लीज लिसन केयरफुली, जिसमें अगर 2 पार्ट्स थे
तो तुम्हें दोनों पार्ट्स आते हैं, या अगर सिर्फ एक पार्ट है और वो तुम्हें पूरा अच्छे से आता है, तो नाउ यू हैव टू जस्ट वो डॉट्स की मदद से पिक अप योर बेस्ट क्वेश्चन. फाइन. एंड वंस यू पिक दैट अप, नाउ कम्स योर रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन. अगर तुम्हारे 15 मिनट ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं, डू नॉट वरी. गिव नेक्स्ट 5-10 minutes टाइम. इफ द क्वेश्चन इज बिग, छोटा है तो 5 minutes टाइम, एंड रीड इट प्रॉपरली. उसको अच्छे से पढ़ो. रीड मतलब प्रॉपरली रीड. रीड के नाम पे तुम्हें मैसरा मैम आ जाना चाहिए दिमाग में कि वो कैसे क्लास में क्वेश्चन रीड करती थी. आज हमें खुद रीड करना है, लेकिन हमें उसी तरीके से रीड करना है जैसे मैम करा करती थी क्लास में. तो आपको रीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. स्क्रिबलिंग कोशिश होना चाहिए नहीं हूँ, लेकिन अगर गलत हो गया है तो एक सिंगल लाइन करके काट दो. बचपन से सुनते आ रहे हो, लाइन छोड़ के लिखो. हेडिंग्स जरूर लिखो. ये वाली पूरी चीज की एक लिस्ट मैं ग्रुप में भेज दूंगी तुम्हें. हेडिंग्स जरूर लिखो. फॉर्मेट पेंसिल से बना लो, स्केल से चल जाता है. ऐसा नहीं है कि तुमको लाइन फ्री हैंड खींचना जरूरी है, बिकॉज कई बार गंदी लाइन खिंच जाती है तो पूरा ही खराब हो जाता है क्वेश्चन. तो आप सिस्टमैटिक फॉर्मेट उसको बना लो. और इस बात को दिमाग में रखो, क्या मेरे पास 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट मौजूद है बस. ये कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द ब्रेन थ्रू आउट रहना चाहिए. 14 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन है तो मेरे पास 21 मिनट मौजूद है. अब कोई दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 1.5 के हिसाब से मेरे पास 7.5 मिनट मौजूद है. अब मैंने जो ये तुम्हें 1.5 मिनट बोला है, इसको मैंने प्रोविजन करने के बाद बोला है. मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो. 21 मिनट किसी क्वेश्चन में लग रहा है, अगर तुम्हें बाई चांस किसी 1-2 क्वेश्चन में 21 की जगह 24-25 मिनट लग गए, पैनिक मत करना. लेकिन 2-3 मिनट से ऊपर नहीं दे सकते फिर हम. अगर तुम्हें लग रहा है 24-25 मिनट हो गए और अभी भी चला जा रहा है, आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए. क्योंकि ये क्वेश्चन के मार्क्स देने की एक लिमिट है और हम इस क्वेश्चन के दलदल में आप फंस गए हैं. अगर तुमने जी जान लगा के पूरा सही कर भी दिया थोड़ी देर में, तो तुम्हें इसके 10 के 20 नंबर नहीं मिल जाएंगे. लेकिन अगर अभी छोड़ दिया तो 2 या 3 मार्क्स का शायद कोई गलत हो रहा होगा, उतना कटेगा, पर मैं आगे के क्वेश्चन में टाइम सेव करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा. तो स्ट्रैटेजिक होना जरूरी है, इमोशनल नहीं काम हम कर सकते. तो यू विल लीव द क्वेश्चन देन एंड देयर इटसेल्फ, आगे बढ़ जाओ. कोई क्वेश्चन 5 मिनट में करना चाहिए, 6-1 मिनट तक लग गए, ठीक है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत ऊपर चल जाएगा, लेकिन बहुत गैप नहीं आना चाहिए. तो यू विल बी पिकिंग अप योर बेस्ट क्वेश्चन एंड देन बिगिन. ऑन एन एवरेज तुम्हारी कोशिश होना चाहिए 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो जाएं तुम्हारे. उसके बाद अगले 1 घंटे में वापस तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो जाएं. कम से कम ये तुम्हारी कोशिश रहना चाहिए, ताकि आपके पास यहाँ पे 14 मार्क्स इंटू 4, 56 मार्क्स के आसपास कम से कम पेपर हो जाए. ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी स्पीड स्लो है, और जिन बच्चों की स्पीड रीजनेबल है, ये जो उनको लगता है कि मेरे को पूरा पेपर होना ही अटेम्प्ट, इतने टाइम में आपकी कोशिश होना चाहिए कि आपका 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के समाप्त हो जाए. 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के समाप्त हो जाएं. तो तुम्हें लगता है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर से तुमको एक आधी क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनता, तो मुझे ये लगता है, प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को, कि यू डू लाइक 3 क्वेश्चंस मे बी, और यू डू योर 4 क्वेश्चंस. फिर तुम्हें लगता है एक आध क्वेश्चन तुम्हें इतना परफेक्ट नहीं बनता, तो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग योर टाइम टू द फुलेस्ट मैन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट मैनर. तुम वो टाइम में 5वां क्वेश्चन कब करने की जगह पहुंच जाओ एमसीक्यू पे, और पहले अपने एमसीक्यूज कर लो. और एमसीक्यूज करने के बाद, केस स्टडी करने के बाद टाइम वहां बचा लो, और फिर जो टाइम बचे वो उस क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर देना. दिस वुड बी स्मार्टर, इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग बिहाइंड दैट क्वेश्चन कि मैं पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव कर लूँ फिर एमसीक्यू पे जाऊँ. तो इसका कोई सेंस नहीं है. तो आप ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हो. और एक बात मैं कहूँगी, 100% नहीं है लेकिन चांसेस काफ़ी होते हैं. आपको क्वेश्चन हो सकता है एक फुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक फुल 14 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाए अमेलगमेशन पे, जैसे ये 4th क्वेश्चन. अब ये आपको फुल अमेलगमेशन पे क्वेश्चन मिल गया है, और 5वां क्वेश्चन आपको मिल जाए फुल कंसोलिडेशन पे, तो ये आपको फुल कंसोलिडेशन पे क्वेश्चन मिल गया. अब कई बार बच्चों के ये क्वेश्चंस ना इतने परफेक्ट नहीं होते, और होते भी हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा होता है. तो पता है, इनको ना तुम लास्ट में करो, एकदम लास्ट में. ऐसा वाला टाइप का जो क्वेश्चन हो इसको छोड़ के रखना, एमसीक्यू और केस स्टडी कर लेना, और इसको एकदम लास्ट में कर लेना. तो तुमको अपना रिमेनिंग पेपर, मतलब 4 डिस्क्रिप्टिव और अपने एमसीक्यूज और केस स्टडी, उनको कंप्लीट कर लेना है 2.5 घंटे में. 2.5 घंटे में फ्लैट.
या 2 घंटा 25 मिनट में, और आधा घंटा जो अब बच रहा है उसमें तुम इस क्वेश्चन को टेकअप, ये समझ लो तुम बात। और अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अमालगमेशन और कंसोलिडेशन दोनों करना प्लान कर रहे हो, तुम्हें इतने अच्छे से आते हैं, तो फिर 2 घंटे के अंदर अंदर रेस्ट ऑफ द पेपर हो जाना चाहिए, और इनको लास्ट में छोड़ के रखो। आधे आधे घंटा एक क्वेश्चन को देखे करना, लेकिन इनको पहले मत उठाना। इसलिए मत उठाना क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से टैली नहीं हुई तुम्हारी बैलेंस शीट, और तुमने जो एक्स्ट्रा टाइम वहां लगा लिया, बचा हुआ पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके मार्क्स इकट्ठा पहले कर लें, वो बेहतर है इंस्टेड के इमोशनल होकर बड़ा टॉपिक उठाएं और उसको खराब कर लें, और बचे हुए पेपर के लिए अपना माइंडसेट भी बिगाड़ लें। आर यू क्लियर? Everybody, is it clear? Write clear in the chat if it is clear, and if you have any doubt you ask. Everyone, फटाफट। Absolutely clear now what I'm saying? बिकॉज स्पीड की वजह से ना बहुत सारे लोग पिट सकते हैं, मुझे पता है ये बात। तो ऐसा कर लोगे तो काम बहुत बेहतर हो जाएगा। कोई बात तुम्हें लग रही है जो तुम्हें पूछनी है और मैं बताना मिस कर गई हूँ? कोई भी चीज़ यू फील लाइक यार ये मैम और बता दीजिए आप कुछ। वर्किंग नोट्स तुम्हें पता है कैसे बनाने होते हैं? वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, तो उसको भूलना मत। स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं, मतलब स्टेप मार्किंग के मार्क्स बोल रही हूँ, नॉनसेंस, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, मतलब स्टेप मार्किंग होती है। क्या solving MCQ in those 15 minutes is a good idea? I won't say that. I don't think that would be better at all. What I have told you, that's the best way of handling. Everybody can have a different thing, but if you want to go completely as per me, I think you can rely. क्वेश्चन वन अगर अच्छे से नहीं आता तो उसको कैसे प्रेजेंट करें? उसको सबसे पहले करो ही मत ना। रिमेनिंग क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से उठाओ, उनको पहले करो। और क्वेश्चन वन में एएस आएंगे जनरली, एएस आएंगे जनरली, उसको थर्ड फोर्थ पोजीशन पे उठा लेना, तब कर लेना। और इतने भी गंदे एएस नहीं आएंगे, मैंने जो बोला ना 29 फिर AS9, उधर से आ सकते हैं इसमें। इवन AS13 में से वहां से आ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वो मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल और थियोरी होता है। ये जो होता है ये मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल और थियोरी होता है बेटा। देखो जैसे इन्होंने ये यहाँ पूछा, तो ये तुम्हारे पास 4 नंबर का ये प्रैक्टिकल, ये अगला सिंपल क्वेश्चन था, ये तो एकदम ही है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन। ये देखो ये तुम्हारे पास 5 नंबर का प्रैक्टिकल, तो मतलब पूरा ही प्रैक्टिकल है, तो ये तो अटेम्प्ट में हर किसी से बनना चाहिए था। AS13 जैसे में हॉरिजॉन्टल वर्किंग कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। MCQ कहाँ पे करना चाहिए? दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन। MCQ का जो वो बुकलेट होती है ना, उसके लास्ट में भी जगह होती है, तो वहाँ भी रफ वर्क कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग स्मार्टली। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कॉपी, ठीक है, तो वो जो तुम्हारा लास्ट पोर्शन है ना, ये लास्ट पन्ना, यहाँ लिखो हेडिंग डालो रफ वर्क, पूरे पेज में रफ वर्क कर लो। और रफ वर्क है तो उससे जो एक पीछे का पेज है वहाँ हेडिंग डालो रफ वर्क, पूरा रफ वर्क कर लो। तो उसके लिए कॉलम मत बनाना, उसके लिए तो पूरे पेज लगा देना रफ वर्क के लिए। सिंपल। क्या बेटा और क्या पूछ रहे हो? मैम जगह छोड़ने में स्पेस इशू, जितना तुम्हें लगता है इतनी जगह लगेगी, और उससे आधा पेज कम से कम एक्स्ट्रा छोड़ो हर बार। छूट जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको बाद से पेंसिल से या पेन से कट लगा देना उस जगह को, अगर एक्स्ट्रा छूट जाती है तो। इज दैट क्लियर? Yes, I am praying for you. You pray for yourself. Do not worry at all. And you have given your, what I would say, affirmation, your confirmation to me and to yourself that you will not stop smiling. That's very important. You will not stop smiling and you will face it with full energy. And last but not the least, 11th ko, what do you have to do? When you get up in morning, number one, what you have to do is रिवाइज एएस का नाम और नंबर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाम और नंबर याद होना चाहिए एक। नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट एएस मैंने कहे हैं उसका कॉन्सेप्ट रजिस्टर रिवाइज कर लेना। इम्पोर्टेंट एएस जो मैंने कहे हैं उसका कॉन्सेप्ट रजिस्टर रिवाइज कर लेना। बस इसके अलावा अगर तुमने कुछ मार्क करके रखा हो कि मेरे को ये रिवाइज करना है, कहीं कोई फॉर्मूला हो, फॉर्मूला एनीवेयर, तो उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना। 11th मॉर्निंग जस्ट डू दिस मच एंड गुड टू गो, दैट्स व्हाट इट इज। अब हम कब मिलने वाले हैं? 11 को जब तुम पेपर लिख लो, तो शाम को 11th को मैं तुम्हें 15 से 20 मिनट के लिए मिलूंगी बस।
15 से 11 की सुबह भी मिलूंगी मैं, उसका मैसेज डाल दूंगी तुम्हें टाइमिंग का, अर्ली रखेंगे अपन। और शाम को मिलूंगी मैं 15 से 20 मिनट के लिए। तुमने जिस भी टीचर से लॉ पढ़ा है, बच्चों ने मल्टीपल जगहों पे पढ़ा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन बस तुम्हारा दिमाग सही करने के लिए 10-15 मिनट के लिए मिल लेना बस। तुम्हें लगे तो, तुम्हें लगे नहीं तो योर पर्सनल कॉल, देयर इज नो इशू। तो आई ट्राई कि हर पेपर के बाद अपन 10-15 मिनट के लिए मिल लें, ताकि आगे के लिए डिस्कस कर लें, क्योंकि एक पेपर बिगड़ता है ना, धड़ल्ले से लाइन से बच्चा 3-4 पेपर बिगाड़ लेता है, वो नहीं करना है अपने को। इसलिए अपने को हर पेपर के बाद कट, आगे, नेक्स्ट, आगे, नेक्स्ट, आगे। इसीलिए मैं बीच बीच में आके खड़ी हो जाऊंगी। ऑल राइट, फाइन, चलो, lots of blessings, lots of wishes, all the very, very best. You will do it. You are all my rock stars. You are champions. You have the potential. And may God Almighty bestow all the blessings on you. God bless you and you will do it. Yes? Hi, Anna. Everybody. Chalo. Love you all. Love you all. Take care. Bye bye. Bye bye.